Hello students, this is Professor Samita Shinde. We will begin with today's class. This is your subject Organization of Commerce and Management OCM. We'll begin with the chapter number 1. In chapter number 1, you are supposed to study all these points. Yes, introduction, non and economic activities, business objectives, role of profit in the business, classification of business, and distinguish. So these are the various points we are supposed to study in chapter number 1. Now I want to give an example that there is an individual person. Yes, we are all individual person, and from morning till night or till day to night we are required number of things. These things are divided into goods and services. Goods means you can feel it, you can touch it, yes, and the services which you cannot see it but you are going to feel it, yes. So this is the individual person, and these are the various needs of the individual person, like transport, hospitals, schools, hotels. So now on my left hand side, all this is services. This is you are going to use it but you cannot see it. For example, if you are going to school, so you cannot tell to your parents that कि मैंने आज इतना केजी सीखा. You cannot count it. मैंने आज इतना केजी पढ़ाई लेके आया हूँ. Books which is carry sorry, books which is carry, it is a product of some brands, but the knowledge you are carrying, that is not having, it's not having any brand, that's your own knowledge, yes, but you are paying the fees to these schools or the colleges. Are you getting the point? So these all are the services on my the left hand side. Now I'm going to show you the goods part, that is clothes, fans, pens, desk, bag, books, anything you can feel it, touch it, use it, yes, which you are going to carry here and there. It is called as a goods. Now we will move to next part, goods and services. Yes, the goods you can feel it, you can touch it, you can have with you, but the services you cannot have it with you. You are just feeling it, you are consuming it, yes, but you are paying for that. यानी गुड्स यानी क्या हम लोग कैरी कर सकते हैं, विच यू कैन सी, विच यू कैन फील, विच यू कैन टच इट. हाँ, उसको टच करके आप फील कर सकते हो कि इसका टेक्सचर कैसे है, क्लोथ्स का टेक्सचर कैसे है, यस, क्लोथ्स कैसे है, उसका मटेरियल कैसे है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ गुड्स. सर्विसेज यू आर गोइंग टू पे, फॉर एग्जाम्पल होटल. होटल में आप खाना खाते हो, खाना इज अ फूड विच यू कैन फील इट. उसको हाथ लगा के दे सकते हो कि ये कैसे बना है, राइस कैसे बना है, दाल कैसे है, यू कैन फील इट. बट जो उसके वजह से आपको होटल में जाने का एक हैप्पीनेस होता है या होटल में जाके खाने का फीलिंग होता है, तो वो एटमॉस्फेयर के लिए आपको जो एटमॉस्फेयर जहाँ पे आप बैठते हो उसके लिए पे करते हो, तो आप वो साथ में नहीं लेके जाते आपके. Got it? So these all are your services. Now we will see next what is given in the goods and services. Goods are fan, pens, etc. Services hospital, hotels, and etc. I hope everyone understand till goods and services. I'll proceed to next part, next slide. That is human activities. Yes, we all are humans. Sure, हम सब लोग पर्सन हैं, इंडिविजुअल पर्सन हैं, हम लोग ह्यूमन हैं, एंड ह्यूमन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थिंग्स इन अ डे. गुड्स में हो सकते हैं या सर्विसेज में हो सकते हैं. सो नंबर ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स. सो व्हाट आर दैट ही इज डूइंग, ह्यूमन बीइंग is doing non-economic activities and economic activities. हम लोग ये बाद में देखते हैं कि non-economic and economic activities क्या है. These economic activities are divided into three parts, that is business, profession and employment. Got till this? So हम लोग non-economic activities को नहीं divide करते, but
the economic activities are divided into three parts, that is business, profession, employment. यहाँ तक समझ में आया? Can I proceed to next one? So this is your human activities. So human activities हम लोग देखते हैं अभी one by one. Non-economic activities. What do you mean by non-economic activities? Non-economic activities. Wait. Non-economic activities are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural, and sentimental requirement without monetary returns or the expectation. यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता, बट यू आर हैविंग योर पर्सनल, social, religious, cultural, and sentimental requirement. Now there are the various events like Diwali, Dashera. Yes, you're purchasing each and every items or each and every goods and services, but it gives you non-economic activity feelings as well. जैसे मुझे पूछा था कि दिवाली में हम लोग गिफ्ट शेयर करते हैं, तो दैट इज योर फीलिंग्स, दैट इज योर पर्सनल फीलिंग्स टुवर्ड्स योर फैमिली मेंबर्स, टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स. And for that reason, this is called as a non-economic activities. So non-economic activities examples we can see, and it will help to you to understand in a more better way. That is, in non-economic activity you cannot get any kind of monetary expectation. यहाँ पे पैसे नहीं मिलते, but आपके जो social feelings हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के बर्थडे में जाते हो तो वहाँ पे सोशल गैदरिंग होता है, या आप कोई रिलीजियस फंक्शन में जाते हो, पर्सनल आपका कुछ किसी से बात करते हो, खेलते हो, डांसिंग करते हो, सो ऑल रीडिंग करते हो, ऑल दिस इज इट्स नॉट गिव यू इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ मनी, बट इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन कि मैंने बुक पढ़ा, मेरा 2 दिन में बुक पढ़ के हो गया, इतना अच्छा बुक था. So that gives you knowledge, that gives you your good kind of feeling whenever you read. If suppose you are having any kind of hobbies, like suppose किसी को हॉबी होगा कि डांस करना, तो किसी को डांस करके अच्छा लगता है, so that gives them good feeling. There is no any kind of monetary expectation. So we will see examples for that. Reading books, playing in the garden, helping to someone. So these are the various examples you can write in your textbook, that is a non-economic activities. Now we will move to next part, important part, which is a economic activity. Economic activity that involves production, distribution and consumption of goods and services at all levels within the society is called the economic activities. Now production, consumption, distribution means what? कल भी मैंने आपको बताया था, या I told you in my previous classes that आप कोई भी चीज़ लो उसको बनाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स ऐसे ही आते हैं मार्केट में, डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं रेडीमेड. नो, देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व. क्या प्रोसेस होता है? पहले तो फार्मर्स खेत में कॉटन बनाते हैं, वो कॉटन से फिर थ्रेड निकालते हैं, दैट थ्रेड कैन बी यूज बाय द क्लोथ मैन्युफैक्चरर. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन प्रोसेस. ये प्रोडक्शन हो गया, और उसको जो प्रोड्यूस किया है वो क्लोथ जो मार्केटर है या जो प्रोड्यूसर है वो क्या अपने शॉप में वैसे ही रखेगा, क्या गोडाउन में वैसे ही रखेगा? नो, he need to distribute it, and there are the various distributing channels through that they are going to distribute their products. For example, गेहूँ पंजाब में बना है, प्रोड्यूस हो चुका है, तो वो महाराष्ट्र में आने के लिए there are number of channels are involved, there are number of people are going to involved, they are going to carry that wheat from Punjab to Maharashtra. So that is, it is called as a distribution. And after distribution, वो distribution place में रहेगा? No, that need to be consumed.
कंजम्पशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम द इंडिविजुअल पर्सन एंड आई रिक्वायर wheat. So I must have to go to the shop, or I have to purchase online, and then I need to pay and I purchase that one and I have to consume that. So this is all your economic activities. यहाँ पे सब में पैसे involved है, money involvement है, and for that reason this is called as the economic activities. Got till this? And at all levels, यानी हमारे यहाँ पे लेवल्स हैं, थोड़े बेटर, उससे बेटर, उससे बेटर. सो हमारे यहाँ पे ऐसे क्लासेस बोलते हैं. यू कैन कॉल इट एज अ लेवल्स. मिडिल लेवल, सॉरी, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल. सो दीज आर द वेरियस लेवल्स. सबको सब चीज़ें लगती है कि उसका जो रेंज है, उसका जो क्वालिटी है मे बी अलग, लेकिन सबको सब चीज़ें लगती है. सो दैट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लेवल्स ऑफ योर sections of the society. Now I'll move to next part. These are the various example. I chose from the economic activity division part, that is business, profession and employment. So this is come into the professional part. He is a professionalist, doctor, teacher. She is also a professionalist, but she is working under someone else. So it is, she is called as an employee. Yes, got the difference? यहाँ पे these people are the businessmen. They're discussing some strategies, and this you can see as a employer and employee relationship. Here is in the center employer, and these are the employees under working under him. यहाँ तक clear हुआ सबको? I'll proceed to next part. The best example is my mother cooks a very delicious food, like you all. आप सबकी मदर भी अच्छा ही खाना बनाती होगी, बट जो हमारे लिए बनाती है, दैट यू कैन कॉल इट एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट वन डे शी डिसाइडेड to start her own catering business. So there is a money involvement, and for that reason this activity you can call it as a economic activity. Got till this? Okay, so I'll proceed to next one. Business. Here are my some keywords, key points related with the business. On the right hand side you can see that there is an individual businessman and he is getting what? Profit. Yes, that means every business in the market, they want to earn what? Profit. छोटा हो या बड़ा हो, business को क्या चाहिए होता है? Profit चाहिए होता है. Now basically what do you mean by business? Business में क्या होता है कि पीपल इन्वॉल्वमेंट होता है, इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ केटरिंग बिजनेस, तो माई इन्वॉल्वमेंट इज देयर. बट सपोज माई बिजनेस इज गोइंग अप एंड अप एंड अप, सो इंडिविजुअल आई कैन नॉट हैंडल इट. आई नीड टू हेल्प, to take a help of someone. That means I need to take a help some other ladies or some other people. They are eager to work with me. Yes, जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, या उनको लगता है कि मेरी कंपनी प्रॉफिट अच्छा ले रही है, तो वो उनको मेरे यहाँ पे काम करना है, मेरे कंपनी में काम करना है इन द कैटरिंग बिजनेस. सो व्हाट दे आर बेसिकली डू, द बिजनेस इज done by an individual or a group of individuals. You can call it as a business. Business में single person भी होता है, and mostly nowadays there are a number of people that are going to involve in the business. Next is business produces the goods and the services, sell in the market, and they are going to sell in the market. हमने देखा है कि बिजनेस क्या प्रोड्यूस करता है, जो हमें अच्छा लगता है एज ए कंज्यूमर, एज ए इंडिविजुअल. मेरी जो डिमांड है वो मार्केट में फुलफिल हो रही है क्या, वो मार्केट बना रहा है क्या, दैट इज कॉल्ड एज अ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे आर सपोज टू बी सेल इन द मार्केट. यानी उन्होंने बनाया और मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैंने ले लिया. दैट मीन देयर इज अ प्रोडक्शन एंड देयर इज अ sell as well. यहाँ तक क्लियर हुआ? Now this business is going to satisfy number of and multiple and complex needs. Complex need यानी क्या? जी मीन्स फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को मार्केट में से क्या चाहिए वही पता नहीं होता है,
वो बोलता है कि मुझे अलग से कुछ प्रोडक्ट चाहिए, अलग से कुछ प्रोडक्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. So these are the your complex needs and multiple needs as an individual have, and that can be satisfied by the business. Production means what? Making the goods, यानी goods produce करना. Goods हम लोग produce करते हैं. तो product may be divided into two parts. Products are the agriculture or the finished goods. Now agriculture में यानी क्या? Directly आपने खेत में बनाया है और वहाँ से आपको directly sell करना है. The best example is the tomatoes. Tomatoes क्या है? Agricultural crop है. Tomatoes सबको लगते हैं. तो tomatoes बनाए, ये खेत में उगाए, that is you can call it as a agricultural product. और ये प्रोडक्ट का कुछ तो अलाइड प्रोडक्ट यानी उसका यूज़ करके, उसका कंपोनेंट लेके, उसका यूज़ करके हम लोग कुछ उससे केचप बनाते हैं या प्यूरीज बनाते हैं रेडीमेड. तो इट इज़ कॉल्ड एज अ फिनिश प्रोडक्ट. इसको प्रोसेस से जाना पड़ता है, उसको कुछ मशीन से प्रोसेस करके उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो चुका है. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ फिनिश प्रोडक्ट. यहाँ तक सबको समझ में आया. Now goods can be produced with the manpower or the machines. गुड्स बनाने के लिए आप मैन पावर यानी ह्यूमन बींग का भी हेल्प ले सकते हो, या nowadays everyone is going to use a big machinery involvements are there. Next is I have written one example which is already I gave you. Cultivating, the example is cultivating tomatoes in a farm, that you can call it as a agricultural product, and using tomatoes creating ketchup with the using machines, it is called as a manufacturing of goods. यहाँ तक समझ में आया. मैंने आपको वीट का एग्जाम्पल दिया था. Here, the distribution includes marketing of goods and services. So there are number of activities are done by your distribution channels. So these are your business. This is you can call it as your business part. So distribution includes marketing of goods and services, means वहाँ पे आपका nothing, marketing is not only the advertisement, it is your transporting, your logistics, your warehousing, or advertising as well. So all this facilitates what? Transfer of goods from your producer to the final product. It is called as your distribution. So this is your whole about about the business. We will move to next part. Read this definition of business. I taken the business definition given by the Professor Hen. I want to explain you that business activities are all those human activities which are directed towards the production and the processing of the wealth. यानी क्या? ये तो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, यहाँ तक समझ में आएगा. कुछ तो प्रोड्यूस करना है, तो प्रोड्यूस करने के बाद बिजनेस स्टॉप होता है क्या? दे आर ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस इट नंबर ऑफ टाइम. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि इनका जो प्रॉफिट है, इनका जो सेल्स है, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं. सो इट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ. यानी जो प्रोडक्शन है उसको प्रोड्यूस भी करना है और उसके वजह से क्या करना है? वेल्थ क्रिएट करना है. किसको? जो उसमें इन्वॉल्व है उन सब लोगों को उसका वेल्थ भी क्रिएट करना है. प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. यहाँ तक क्लियर हुआ? So definition is business activity are all those human activities which are directed towards the production and the processing of wealth. Here I want to give an example of hotel industry. छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल या छोटे केक शॉप होते हैं. Nowadays cakes are very famous. Yes. तो केक जो होते हैं, तो you can see the number of outlets or a number of franchises are nearby to you. तो ये for example, I want to give an example of Keki's. Keki's is a cake shop. आप सब लोगों के nearby आपको दिखाई देता है Keki's. तो यहाँ पे उसका ब्रांच सब जगह पे है. That is उन्होंने एक ब्रांच खोला क्या? No.
यानी उनको वो जो प्रोडक्शन है वो तो चालू है, और वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए they are going to open, there are number of outlets here, there are number of areas में उनके आउटलेट है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जिसको वो अच्छा लगता है कुकीज़ का केक, तो दे आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम देयर, यानी उनका भी इनकम हो रहा है, उनका भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको चाहिए उसको भी अच्छा लग रहा है, दे आर परचेसिंग दैट वन। एंड प्रोसेसिंग ऑफ इट, ये आउटलेट कैसे बनते हैं फ्रेंचाइज जो छोटे छोटे एरियाज में कैसे ओपन करते हैं उनके शॉप, इट इज मीन्स व्हाट, दे आर गोइंग टू ऑन अ प्रॉफिटेबल मोड, उनके प्रॉफिट हो रहा है इसके लिए वो दूसरे जगह पे उनका ब्रांच ओपन हो रहा है, दैट मीन्स दोज हु आर हैविंग द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड, सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका वेल्थ भी क्रिएट हो रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट आई मूव टू, now, these are the various characteristics or the features of business. So, what is the business characteristics? What are they? So, it's an economic activity, two parties, profit motive, production of goods and services, exchange of goods and services, dealings in the goods and services, continuity in dealing, uncertain returns, element of risk, customer satisfaction. All this is features about the business. अब बिजनेस में देखो क्या होता है, देयर आर द टू पार्टीज, मीन्स व्हाट, एक तो कोई बेचने वाला होता है, एक तो कोई खरीदने वाला होता है, दैट मीन्स देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर। सो ऐसे हैं हमारे डिफरेंट फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। वी विल सी द फीचर्स पार्ट in the next class. Thank you for students by listening very patiently. Have a good day. Take care. Thank you.